been the principal instrument in Indian classical music since 18th century and is also known as modern caretaker of an ancient rhythmic tradition. It is approximately 5,000 years old, but its exact place of origin is still unknown. The word tabla comes from an Arabic word tabl, which means drum. There are multiple theories about the origin of tabla. The first written scriptures about music can be found in Vedic scriptures of Aryan culture. The most ancient Vedic literature described drums as drums covered with skin of wild animals which were used in various rituals. The Indian theory traces the origin of tabla to indigenous ancient civilization. There are stone sculptures in Bhaja caves depicting a woman playing a pair of drums, which people have claimed as the evidence to the origin of ancient Indian tabla. Another version states that Amir Khusro, a musician supported by Sultan Alauddin Khilji, invented the tabla when he cut an awaz drum which used to be hourglass shaped into two parts. However, no painting or sculpture or document dated to his period supports it with this evidence. Although modern research suggests that tabla was invented in the first half of 18th century by Amir Khusro, who was instructed to develop a more subtle and melodic percussion instrument that could accompany the new style of music. So he cut the pakhavaj into two to create a tabla. कहा जाता है कि तबला से पहले पखावज को यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया गया रिदम के तौर पे, लय के लिए, लयकारी के लिए। अगर कोई सितार बजा रहा है, सरोद बजा रहा है, सारंगी बजा रहा है, कोई गा रहा है, तो उसके साथ जो रिदमिक इंस्ट्रूमेंट होता था वो पखावज होता था, जो दोनों हाथों से लेफ़्ट टू राइट इसको बजाया जाता था। उसमें एक साइड उसकी जो है वो थोड़ी छोटी होती थी, जिसकी आवाज़ जो है शार्प थी, और एक साइड जो है उसकी वो बेस को रिप्रेजेंट करती थी। कहा जाता है कि हज़रत अमीर खुसरो ने ये महसूस किया कि सितार के लिए, और जो उनका गायकी का अंदाज़ जो था, जो ख़याल, कौल, कलबाना वगैरह है, तो उसके लिए उन्होंने महसूस किया कि ये आवाज़ जो है थोड़ी भारी है। इसके लिए मज़ीद आवाज़ को नफीस होना चाहिए। तो उन्होंने उस पखावज की जो पोजीशन थी, जो उसका पोस्चर था, उसको चेंज किया। पहले उसको यूँ बजाया जाता था, तो आपने उसको दरमियान से काट के उसको दो हिस्सों में कन्वर्ट किया और फिर उसको तबले की शेप दी, और अब ऊपर से नीचे की तरफ उसको हाथों की जो पोजीशन थी उसे बजाया जाने लगा। और इस सिचुएशन में उसकी आवाज़ जो थी मज़ीद जो है वो एक सॉफ्ट टच आ गया, उसके साउंड में एक नफासत आ गई। तबला नो डाउट अगर हमें किसी और का नाम तारीख़ में नहीं मिलता तो इसका सेहरा जो है वो हज़रत अमीर खुसरो के सर ही जाता है। Tabla is basically a percussion instrument which consists of a pair of drums. The big one is called dhama and the long cylindrical one is called poda. The poda is used for creating treble and tonal sounds, while the dhama is used to produce bass sounds. Both drums are placed on ring-shaped holders made of plant fiber covered with cloth to balance them while playing. Tabla consists of multiple parts. Both the drum consist of same membrane, and the outermost membrane is called chati, which is made up of goat leather. The middle one is called maidan, and it is also made up of goat leather. And the inner one is called syahi, which is made up of paste of rice and iron dust. The thinner bases wrapped around to bind the tabla are called badi or dori. It is made up of leather. The smaller wooden blocks in between the badi are called gatta, which are used to fine-tune the instrument. The strap of the leather wrapped around the chati is called gajra or pagdi. It is also made up of leather. Tabla's versatility in all musical styles has enabled it to become the most popular percussion instrument in all of the subcontinent. The level of sophistication and tonal beauty it possesses has elevated the instrument to an unmatched status in the world of percussion. Technically, every instrument have either higher aspect of sharpness or higher aspect of bass in its tone. But tabla is the only rhythmic instrument which is balanced, and because of these balanced tonal properties, it gained much importance. When we talk about tabla,
actually we are talking about rhythm, and rhythm can be created from any instrument, any percussion instrument, either it's drums, either it's tabla, dhol, pakhavaj, or any percussion, right? अब बेशक वो मॉडर्न हो या एक कल्चरल हो, फैशन में हो या ट्रेंडी हो, whatsoever. बट जब हम किसी भी किसी भी जॉनरा की बात करते हैं, उसका बुनियादी जो कहें कि जिस पे वो खड़ा है, कव्वाली, खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने की कव्वाली पूरी दुनिया ने सुनी। इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार, उनसे उनसे मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा या उनसे ज़्यादा फ़ेम किसी ने भी हासिल किया। लेकिन उनकी कव्वाली का अगर आप निचोड़ देखें, कव्वाली की बुनियाद देखें, तो वो रिदम। आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि अल्लाह में से रिदम गायब है, तो वो मसला है, ठीक है ना? अब गोरे नहीं नाचेंगे, अब गोरे खान साहब के कॉन्सर्ट पे शायद उतने ना आएँ, जितने हुआ करते थे। तो रिदम जो है, वो स्ट्रेंथ है किसी भी जॉनरा की, और ख़ास तौर पर कव्वाली, ख़ास तौर पर फ़ोक म्यूज़िक, इन दोनों जो मीडियम हैं म्यूज़िक के, इनमें सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ को आम एक बंदा एन्जॉय करता है, वो रिदम होता है, या जिस पे क्लैप शुरू होती है, या जिस पे लोग डांस करते हैं, या जिस पे हाथों की मूवमेंट शुरू हो जाती है, या जिस पे कोई आम छोटा-सा बच्चा, कोई म्यूज़िशियन नहीं, छोटा-सा बच्चा, वो भी क्लैप शुरू कर देता है, विदाउट नोइंग कि व्हाट ही इज़ सेइंग, सिंगर क्या कह रहे हैं, उसको नहीं पता। या किसी गोरे को नहीं पता कि दमादम मस्त कलंदर का क्या मतलब है, या अल्लाहू का क्या मतलब है, यू नो? लेकिन वो एन्जॉय क्या कर रहे हैं? रिदम। उसको रिदम अच्छा लगा, रिदम की बाँट अच्छी लग रही है, और ख़ास साहब जैसे जो लोग हैं, जिन्होंने रिदम पे कह लें कि पीएचडीज़ की हुई हैं, एक नहीं कि कितनी ज़्यादा की हुई, वो फिर उस रिदम का इस्तेमाल बड़े मज़े से करते हैं। Like every other rhythmic instrument, it also depends on matras and tals. Matras and tals are basically musical measures used to measure beat. Tabla has a complex playing technique. It involves extensive use of fingers and palms, which produces a wide variety of different sounds and rhythms called mnemonic syllables bowls. Tabla bowls has to be learned by tabla players even before learning how to play the tabla physically. तबले के मुख्तलिफ बोल होते हैं जी। फर्स्ट जो है हमारा जो बुनियाद है, जहाँ से बुनियाद स्टार्ट होती है, वो 3 ताल है। जैसे धा धिन धिन ना धिन धिन ना, ता तिन तिन ना धिन धिन ना। इसमें 2 भरे होते हैं और 1 खाली होता है। भरे बोल में ये होता है कि भरे बोल में आप सम का आपका होता है, ठीक है? जैसे धा दिन दिन ना दिन दिन ना, ता तिन तिन ना दिन दिन ना। 3 भरे हैं और 1 खाली है। Tabla players are called tabla nawaz and are known according to their gharanas. A gharana, as the name suggests, is the family lineage to which a tabla nawaz belongs to. Each tabla gharana have a different style of playing tabla. There are 6 tabla gharanas: Delhi gharana, Lucknow gharana, Farrukhabad gharana, Banaras gharana, Ajrada gharana, and Punjab gharana. Delhi Gharana is known to be the most oldest Gharana and the Gharana which made much improvisation in the earliest form of tabla, that is Pakhavaj. But today among them the most famous one is Punjab Gharana, as it has produced some of the biggest tabla legends in the world. Mian Qadir Baksh is known for holding the foundation of Punjab Gharana, and today in Pakistan each and every tabla player is his student. Punjab Gharana rose to fame because its tabla players starting to play tabla on screen for film and TV. So people started to recognize tabla players like Ustad Tafu Khan and Ustad Zakir Hussain. पंजाब घराना स्टेज पे ज़्यादा देखा है, संगत के हवाले से भी अगर लगाया जाए और सोलो के हवाले से भी हमारे यहाँ, और एक बहुत बड़ा और नाम उस्ताद ताफू खान साहब,
उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका रहा, ना सिर्फ़ तबले के हवाले से बल्कि जितने भी परकशंस हैं, चाहे वो ढोलक हो या कॉन्गो-वोंगो हो या और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा एक मकाम पे लेके आए। In Pakistan, from Punjab Gharana, Ustad Mian Shaukat Hussain, Ustad Tari Khan, and Ustad Ajmal Khan were awarded with Pride of Performance Award, and Ustad Ijaz Hussain Janjua was awarded with Tamkha Imtiaz by the President. While in India, Ustad Allah Rakha Khan was awarded Indian highest civil award, the Padma Shri Award. And Ustad Zakir Hussain was the youngest tabla player to be awarded with the Padma Shri Award, and now he is also given the title of the Master of Percussions. Making of tabla is also a complex and a beautiful art. As there isn't any institute for tabla making, so it is a hereditary skill. Lahore's Taksali Bazaar and Rawalpindi's Banni Bazaar is famous for tabla making in Pakistan. Tabla making is quite a hectic job as it takes a lot of time and patience. A tabla consists of pair of drums, poda and dhama. The poda is made of shisham, neem or mango wood, but preference is given to shisham wood, and the dhama is made of copper, bronze or thin iron sheet as per the demand of customer. Then the goat skin is cleaned and prepared for the making of membrane of tabla. After the preparation, goat skin comes into clean leather form, which is then oiled and watered and then cutted to make ropes for gajra. Then a circular cutted leather piece is fitted on tabla, and holes are made to fix the braces from the top, and these braces are tied to another ring at the bottom of the instrument. Then syahi is made to apply on the top of the tabla. Syahi is actually a paste of rice and iron dust which is crushed with a special stone, and then it is applied to tabla. After that, tabla makers rub the syahi with stone to make sure it is completely dissolved in the membrane, and the tabla is ready. All of this procedure takes about 10 to 15 days. A nice pair of tabla price ranges from 35,000 to 50,000 rupees. Tabla is considered as a dying art, especially in subcontinent region, both playing and making. One must do something in order to save it, as it is subcontinent's culture. Tabla, yes, tabla is dying instrument, not because of the modernization, but it because of our behaviors. हम अपने कल्चर से दूर जाते हैं, दूर भागते हैं, हमें दूसरे कल्चर जो हैं वो हमेशा से फैसिनेट करते हैं. सो मैं चाहूँगा कि हमारी नस्ल जो है वो इस इंस्ट्रूमेंट को सीखे, क्योंकि ये हमारा कल्चर है, हमें इससे दूर नहीं होना चाहिए. A nation's culture is its true identity. Tabla has a strong connection with subcontinent's tradition that is dying out. If not the art, we should at the very least preserve the legacy of it.